आज हम बात करेंगे स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किट की, जो नीट 3.7 है ईयर 306 में। स्टाइलस हमारे को पता है कि बहुत ही हीटेड होता है और उसके हमें प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि एक सर्टेन रेंज के अंदर ही और एक सर्टेन स्पीड के ऊपर ही हमें इसे काम कराना होता है। सो उनके लिए हमारे को इनपुट सर्किटरी के अंदर कुछ कंपोनेंट्स हमारे को लगाने होते हैं, सो दैट हम जो हमारा स्टाइलस है हम उसे प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये साइड में तो एक स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किट का है। मेन थीम इसमें जेनर डायोड्स लगे हुए हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे कि स्टाइलस और पेन असेंबली is very delicate part of the cutter. Thermal stylus will burn out or get too dirty, या तो burn out हो जाएगा तो dirty हो जाएगा. Transfer the heat to the wax coated paper. The ink pen will dry up and clog. So both types will bend or break. दोनों bend हो जाएगी या break हो जाएगी. If allowed to move against एक्सट्रीम लिमिट्स, अगर एक्सट्रीम लिमिट्स तक हम मूव करने लगेंगे सो वो तो डटी हो जाएगी या बर्न हो सकती है। सो these are the limitations. Therefore, the stylus protection circuit is incorporated in the recorder so that violent mechanical overshoot, जो overshoot हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, कैन नॉट डैमेज और bend the stylus. One simple technique used by several recorders manufacturers to connect a pair of jain reference diodes. हम jain reference diodes लगा देते हैं D2 and D3 across the galvanometer coil. आप देख रहे हैं डायग्राम में across the galvanometer coil. The current flow in the coil produces a voltage drop across the coil. The voltage when tries to reach more than breakdown voltage of the chain, उनके breakdown voltage से ऊपर चढ़ती है तो उनके बाद तक chain will conduct करेगा and it will limit the voltage across the coil. जैसा हम करते हैं अक्सर सर्किट से, thus high voltage appearance is totally avoided. So a very simple circuit. So this is the stylus protection circuit. With more sophisticated stylus protection system is shown in this diagram. आप देखेंगे इसके अंदर हमारे इनपुट्स हैं, एक हमने एम्पलीफाइड करके ये गैल्वेनोमीटर के ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पे C1 के आप देखेंगे कैपेसिटर है C1 जो कि इसका काम करती है गवर्नमेंट का, इसके दो पार्ट्स है A and B। इधर यहाँ पे करंट्स है आपको I1 I2 के बारे में बताएंगे। बेस डिटेक्टर इसका सो देखते हैं इसके बारे में। आप देखेंगे इसके अंदर ये जो दिस सर्किट यूजेस a feedback signal developed in a transducer. Feedback signal developed in a transducer gained to galvanometer armature. The transducer is a differential. The transducer is a differential capacitor C1. When the stylus is exactly the middle position, two halves of capacitor C1A or C1B will have identical capacitance. So due to it, the AC carrier signal fed to each section will have equal phase and amplitude relationship. Under this condition, the DC controls total voltage and current I1 will be 0. The control voltage will be developed of either polarity as the stylus moves upward or downward.
due to change in C1A and C1B. For example, as the stylus moves upward, C1B is larger than C1A. ठीक है? The phase detector will provide the output of one type of polarity. If the stylus moves downward, नीचे की ओर move करता है तो C1A is larger than C1B, hence detector output will be of another polarity. The DC voltage is the function of such movement and is had a negative feedback loop. So tendency of the stylus for going too much upward or downward is avoided. This protects the stylus from larger input strings. यही protect करती है. The detected DC voltage can be differentiated, which will be a representation of velocity component and is applied to the amplifier in negative feedback fashion will reduce fast changing events. Thus, damage to the stylus due to the high speed is also avoided. So high speed की वजह से भी avoid हो जाती है. This function is performed by RC differentiator circuit and current I2 is the function of velocity component as rate of change of displacement is velocity. This protection circuit avoids damage of the stylus due to high input swing and fast speed events. ये तो इम्पोर्टेंट है जिनकी वजह से हम इसको अवॉइड कर देते हैं. नेक्स्ट वी कम टू द एक्स वाई रिकॉर्डर. हमने स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर देखा था. वहाँ पर हम एक वेरिएबल होता था एंड अदर वाज द टाइम. एक्स वाई रिकॉर्डर के अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं. उनके रेफरेंस एक दूसरे के रेफरेंस में हमारे को प्लॉट करना है जो कि यूनिट 3.8 है. An XY recorder plots the instantaneous relation between two variables. The writing pen will be reflected in both X direction and Y direction on a stationary chart paper. Stationary chart paper is reflected. Depending on the desired application, one or more write pens are used. The motion of the pen in X and Y directions is obtained by servo motors. A sliding pen and moving arm arrangement is used with XY recorders. ये स्लाइडिंग फैन होते हैं, मूविंग आर्म अरेंजमेंट. ये आप डायग्राम देख सकते हैं. सर्वो मोटर्स हमने काम में ले रखी है पेन ड्राइव के लिए. यहाँ पे सर्वो एम्पलीफायर लगे हुए. दोनों में से एक आर्म ड्राइव हो गई, एक पेन ड्राइव हो गई, जो कि एक आर्म को मूवमेंट कराएगी, जो कि एक पोजीशन के लिए, जैसे वाई इनपुट के लिए आर्म मूव कर रहा है तो एक्स के लिए हमारा पेन मूवमेंट कर रहा है. बाकी एक्स हो गया, एक बैलेंस हो गया, चॉपर लगा दिया, सर्वो एम्पलीफायर लगा दिया, पेन पेपर हो गया. या आप इधर देखेंगे, यहाँ पे रेड के अंदर एक आर्म हो गया, ये एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, पेन जो है वो आपके वाई डायरेक्शन में मूव करेगा. दोनों जो एक्स इनपुट वाई में एक रेफरेंस, जो दोनों को एक सिग्नल देते हैं ताकि जो दोनों का डिफरेंसेस हैं विद रेफरेंस वो आपके मूव कर सके, ताकि वो कंट्रोल्ड वे में दोनों का मूवमेंट हो सके. इसलिए हम रेफरेंस सोर्स से लेते हैं. सो from the block diagram, the X input and Y input are supplied to the error detector in series with the standard reference voltage offered by the internal reference source. The output of the error detector is given to the chopper. The servo amplifier is driven by the chopper. The amplifier output drives the pen. The Y amplifier's output drives the arm. A square shaped graph paper will be used. It is fixed over a pad by electrostatic attraction or by vacuum. The input signals are attenuated to around 0.5 millivolt, which is within the dynamic range of the recorder. Both X and Y signals are compared with the internal reference source. This is done
in the balancing or error detector block. The X and Y channel error output will be the DC error, which is the difference between the input signals and the reference voltage. The DC error signal of both channels is used in the choppers. जो error signal आया है to convert it into an AC signal. Chopper का काम तो DC को AC में convert करना. The magnitude of the AC output of the chopper is insufficient to drive the motors of the pan and the arm. Therefore, the output of the two choppers will be amplified in the servo amplifier. The servo motors drive the pan and the arm. The pan and the arm execute motion in proper direction to reduce the arm. The movement of the pan and arm is to bring the system to balance. The variation of X and Y signals move the pan and the arm in the appropriate directions to keep the system in balance. The movement produces a record of the signal components on the paper. It is to be remembered that both X and Y channels and the total system works simultaneously. ठीक है, ये हमारी फंक्शनिंग थी. XY recorders are used in the recording of the speed torque characteristics of motor, regulation characteristics of power supply, characteristics of electronic devices like time steps. उसमें दो अलग अलग वेरिएबल्स दे सकते हैं. हिस्टेरिसिस का, स्ट्रेस स्ट्रेन का, सो कई जगह हम उसकी applications ले सकते हैं. This is all about the XY recorders.